अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय प्योर। आज हम लोग करते हैं अपनी वीडियो को कंटिन्यू, अपनी मतलब स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं। हमने कर लिए थे BT101 के BT101 इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। इसके हमने इस वीक के 46 टॉपिक कर लिए हैं। अब उससे आगे चलते हैं और अगले टॉपिक्स भी कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो जी कंटिन्यू करते हैं। सेशन एक्सपायर हो गया, सेशन को जो है वो लॉगिन कर लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। चलो जी टॉपिक नंबर 47 का पीरियड असेसमेंट ले लेते हैं। फीडिंग स्ट्रेटेजी इन विच ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन पोलन्स pollinivores. Which sequence is true about use of energy? Light energy to chemical energy to organic molecules. Photosynthesis is a redox reaction. So all are correct. Thanks a lot. इसको करते हैं क्रॉस। अब हम अपनी वीडियो को सुन लेते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है फॉस्फोरस साइकिल। Phosphorus is another important biogeochemical cycles along with the carbon, water and nitrogen. So the phosphorus is an important component of nucleic acids. They are part of phospholipids which are making 70% of our cell membranes. Similarly, ATPs also contain three molecules of phosphate. And we know all these three components are very important for sustaining a cell life. So the phosphorus it is the main source of phosphorus is present in water, in soil and in the form of rocks. And the compound which would be present just make phosphorus entrap हो गई है, that compound is called the phosphate. So opposite to carbon, nitrogen and water, phosphorus जो है वो atmosphere में प्रेजेंट नहीं है, तो इट इज entrapped in the form of phosphates और ये सिर्फ और सिर्फ जो है इधर या तो वाटर के अंदर डिसॉल्व है या फिर ये सॉइल पार्टिकल्स में रॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल है. सो इट्स ओनली इन सॉलिड फॉर्म. फॉस्फोरस साइकिल वो एक ऐसा एक डायनामिक प्रोसेस है जिसके थ्रू सॉलिड फॉर्म ऑफ फॉस्फोरस इज ट्रांसफर्ड थ्रू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स और वो डिफरेंट फेजेस में से गुजरती है एंड इवेंचुअली इट गोज बैक इनटू द सॉइल अगेन. सो दैट इज द प्रोसेस व्हिच इज मूविंग दिस फॉस्फोरस टू एंड फ्रॉम बिटवीन डिफरेंट एनवायरमेंट्स एंड द ऑर्गेनिजम्स. Phosphate के salts are जो कि rocks में हैं, they are released through the process of erosion and weathering. So we are familiar with the calcium phosphate, potassium phosphate, and these rocks are present in terrestrial environment. They are present under oceans. Wind और water से होने वाला erosion इनमें से gradually phosphates को release करता रहता है. और मोस्टली ये अंडरग्राउंड वाटर में डिसॉल्व होते रहेंगे या अगर ये किसी ओशन वाटर बॉडी के अंदर है तो ये वहां के वाटर के अंदर डिसॉल्व होते रहते हैं. एंड फ्रॉम देयर दिस फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट इट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स एंड दीज प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर्स. सो दैट्स हाउ द फॉस्फेट इट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू द एनिमल्स. एंड फॉस्फोरस साइकिल इज कंसिडर्ड द स्लोएस्ट साइकिल एज कंपेयर टू अदर बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. लेट्स सी हाउ. सो अभी हमने कहा कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर में से फॉस्फोरस को अब्सॉर्ब कर लेते हैं इन फॉर्म ऑफ फॉस्फेट्स. दे कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंट कंपाउंड्स, जिनका भी हमने जिक्र किया, जैसे कि वो एटीपीज हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स हैं, वो न्यूक्लिक एसिड का कोई पार्ट है. तो ये कन्वर्जन के बाद वंस दीस प्लांट्स आर ईटन बाय दीस एनिमल्स, फॉस्फेट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्लांट्स टू द एनिमल्स. सो दिस फॉस्फेट आफ्टर डेथ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स इट वुड बी रिटर्न्ड टू द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन. तो एक साइकिल जो है वो फिर कंटिन्यू रहता है. सॉइल में वापस जाने के बाद दे कुड बी डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ रॉक्स अगेन. और उन रॉक्स में और इन सेडिमेंट्स में ये मिलियंस ऑफ ईयर तक भी सेटल डाउन रह सकते हैं अंटिल कि वाटर या विंड से होने वाला कोई इरोजन दोबारा से वेदरिंग के थ्रू इनको उस साइकिल में वापस ले आता है. So this is the reason कि phosphorus cycle is the slowest biogeochemical cycle because it could stay many longer time and many years in form of its solid form. But in case नाइट्रोजन की तरह से जिस तरह से हमने कहा कि नाइट्रोजन का एडिशन या सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, उसमें इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हैं और ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो आर्टिफिशियली नाइट्रोजन को एक इकोसिस्टम में रिलीज कर रही होती है. सिमिलरली फॉस्फोरस साइकिल में भी ह्यूमन एक्टिविटीज एक रोल प्ले करती हैं और ऐसे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स व्हिच कंटेन फॉस्फेट
So these are adding more phosphate in water ecosystem or terrestrial ecosystem. So in that case, अगर water के अंदर ज़्यादा phosphorus और nitrogen release हो जाती हैं, it would result in the phenomenon of eutrophication. So we know that eutrophication is an excessive production of algae और या कोई plant biomass है जहाँ पे present है, mostly it is in the form of algae. वो बहुत significantly, remarkably grow करती है और वहाँ पर जो available resources हैं, particularly oxygen, उसे consume कर लेती है. So this eutrophication, that is a side effect of excessive use of fertilizers, both in nitrogen and phosphorus. This is a summary of phosphorus cycle. Here we know that phosphate is present in form of rocks and minerals और weathering erosion के process के through phosphate in rocks से release होती है and it is released in form of soluble phosphates in soil. वहाँ पे underground water में dissolve हो सकती है या फिर अगर ये rocks किसी भी water body की bottom पर हैं तो ये water में dissolve हो जाती है. The next phase is कि ये phosphates they are consumed by the plants. So this is the phosphate consumed by these roots. They are uptaken by the roots of plants and these plant tissues are consumed by the animal tissues. It's transferred into the animal tissues because animals are eating the plants through the food chains और decomposition के through phosphate जो है वो दोबारा से फिर soil में या water में release होकर अपनी rocks का और soil का एक part बन जाता है. Excretion is another process. Plants और animals दोनों excretion के process में phosphate की एक limited amount जो है वो environment में release करते हैं. So that's how this phosphorus is being cycled in our ecosystem, but its rate is very slow. So that's why humans they use phosphate, artificial source of phosphate in form of fertilizers ताकि वो plants जो हैं उनको grow करा सकें. So friends, हमारी वीडियो जो है वो होगी है कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. Phosphorus is an important building block of biomolecules, for example nucleic acids, membrane, phospholipids, ATP, etc. Unlike nitrogen, carbon or oxygen, phosphorus is not present in gaseous form in the atmosphere as it is mainly present in water, soil and rocks, and as phosphates. The movement of phosphorus between environment and organism is known as phosphorus cycle, and it is considered as the slowest cycle of all nutrient cycles in the environment. Weathering of rock containing phosphate salts releases it into environment. As these get dissolved in water, these dissolved phosphates are absorbed by plants which use it in building of biomolecules. Animals acquire this phosphate consuming either plant or herbivores. At the death of animals and plants, the decomposition process releases the phosphorus in their bodies into the environment. This released phosphorus ends up in sediments or rocks formation where it would remain for millions of years. And similar to nitrogen, excessive use of fertilizers results in eutrophication, abundant growth of algae in water bodies, affecting the ecosystem. In this lesson, the students will learn about phosphorus cycle और ये हमने लर्न कर लिया है. अब हम चलते हैं आगे. पोस्ट असेसमेंट ले लेते हैं. ठीक है. Okay. When water changes from gaseous state to liquid state, this is known as condensation. There is a dash on gentle terrain, less runoff and more infiltration. यार ये पिछली बार में सही होता था. Initial incorporation of carbon into organic matter is known as carbon fixation. Okay, all are correct. Thanks Lord. इसको कर देते हैं क्रॉस. हमारा ये टॉपिक हो गया है डन. अगले टॉपिक पर चले जाते हैं. अगला टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 48 और लेक्चर नंबर 48 तो हमारा है एक्सटिंक्शन एंड हैबिटेट लॉस. ओके, टेक कर लेते हैं इसको. रीअसेसमेंट है इसकी. तो ecological succession occurs in an ecosystem where there is change in community structure, community composition, vegetation, architecture, all. Okay, हम चुप कर लेते हैं.
सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है ना अपनी वीडियो को अच्छे से सुन लेते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स वहां पर स्पीशीज की ग्रोथ में और वहां पर स्पीशीज की डाइवर्सिटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर कोई इंबैलेंस ऐसा आ जाता है जो कि इन फैक्टर्स को, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो एबायोटिक हो, पर्टिकुलरली अगर वो एबायोटिक हो, तो वो वहां पर स्पीशीज की जो भी पॉपुलेशंस हैं उनकी सर्वाइवल को बहुत रिस्क पे ले जाता है। सो इन दैट केस इफ दिस एडवर्सिटी और एडवर्स सिचुएशंस बहुत इंटेंस हो जाएं, तो रिजल्टेंटली देयर कुड बी टर्मिनेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी इन अ हैबिटेट, एंड दिस टर्मिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टैक्सॉन इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन को के मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं कि जब लास्ट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू दैट ग्रुप इट वुड डाई, वी वुड से देयर इज नो चांस और देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू रिवाइव दिस पॉपुलेशन अगेन। सो व्हेन द लास्ट इंडिविजुअल डाइज, दिस इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ एक्सटिंक्शन। और इस लास्ट इंडिविजुअल की डेथ से पहले ही उस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन की ब्रीडिंग और रिकवरी की जो अपॉर्चुनिटीज हैं या उसकी एक एक्सटेंट है वो ऑलरेडी डिमिनिश हो चुका होता है। एक्सटिंक्शन के बहुत सारे रीजंस हैं, तो बाद में बहुत डिटेल के साथ भी स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर देयर आर वैरायटी ऑफ रीजंस व्हिच कैन अफेक्ट पॉपुलेशन सर्वाइवल इंडिपेंडेंटली, और इट कुड बी प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ ग्रुप। सो the most important reason of extinction is disruption of habitat. Loss of any ecosystem interactions, for example वहाँ की food chain और food web जो है वो disrupt हो जाता है किसी एक पॉइंट पर, एक से ज्यादा पॉइंट पर, तो वो इस इकोसिस्टम के बैलेंस को, उसके बायोटिक फैक्टर के जो बैलेंस होगा उसको डिस्टर्ब कर देता है। इसके अलावा और भी जो इंटरेक्शंस हमने स्टडी की हैं, फॉर एग्जांपल सिम्बियोसिस है, प्रेडेशन है, इसमें किसी एक स्पीशी की एलिमिनेशन, एक से ज्यादा स्पीशीज की एक्सटिंक्शन वहाँ पर मौजूद दूसरी स्पीशीज की फंक्शनिंग को नेगेटिवली अफेक्ट करती है। एक्सटिंक्शन की दो दूसरी रीजंस हैं, उनमें से द अदर वन इज पोल्यूशन व्हिच इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। देयर कुड बी लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस, जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज ही इन्वॉल्व होंगी वहां के हैबिटेट को डैमेज करने के लिए, और इस हैबिटेट डैमेज में किसी ऐसी स्पीशी को एलिमिनेट कर देंगे जिससे दूसरी स्पीशीज की सर्वाइवल रिलेटेड है। सो देयर वुड बी अ लॉस इन जेनेटिक वेरिएशंस, और ऐसी गुड वेरिएशंस जो कि सर्वाइवल के चांसेस को इंक्रीज करती हैं, दोज गुड वेरिएशंस आर बीइंग लॉस्ट एंड द वीक इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन दे बिकम एक्सटिंक्ट। देयर कुड बी कैटास्ट्रोफिक डिस्टर्बेंसेस, कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स, अचानक हो जाने वाला कोई भी ऐसा वाकया जो कि नेचुरली हो रहा है, उसमें ह्यूमन एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है। इट कुड बी वोल्केनिक eruption, इट कुड बी मीटराइट, बुश फायर, फ्लडिंग, ये भी किसी स्मॉल साइज ऑफ स्पीशी को एक्सटिंक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल और ह्यूमन काज्ड एक्टिविटीज जो हैं दे आर आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। बट डिस्ट्रप्शन ऑफ इकोसिस्टम इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट मेजर कॉज बिहाइंड द एक्सटिंक्शन। सो वंस दैट इकोसिस्टम इज डिस्ट्रप्टेड, द हैबिटेट इज लॉस्ट बाय डिफरेंट रीजंस, वहां पर मौजूद स्पीशीज, उनकी पॉपुलेशन सर्वाइव करने के काबिल नहीं रहती। सो हियर वी कुड से इफ हैबिटेट इज लॉस्ट, we could see in this table कि mammals की 19 species ऐसी हैं जो कि सिर्फ habitat loss की वजह से extinct हुई हैं, 20 in birds, 5 in reptiles, 35 in fishes. So we could say that habitat loss is the most important cause of modern day extinction. So किसी भी स्पीशी का habitat loss होने के पीछे सबसे बड़ी रीजन जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज है, जो कि नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स को। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स में, इसमें रेनफॉल्स भी हैं, इसमें टेम्परेट जोन्स भी हैं, इसमें टुंड्रा भी है, इसमें पोलर एरियाज भी हैं, एंड इवन द ओशन फ्लोर्स आर आल्सो बीइंग अफेक्टेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। सो नेचुरल हैबिटेट्स आर adversely affected in 3 ways. One is the habitat destruction by the human activities, second is pollution, again human is responsible for this, and the third is habitat fragmentation. So we will study the habitat destruction firstly. Let's study the different reasons of habitat destruction and its effects on an ecosystem with the help of this video. 8 birds, 1 out of 4 mammals, 1 out of 4 conifers, 1 out of 3 amphibians, and 6 out of 7 marine turtles are threatened with extinction because of human actions. Habitat loss, pollution, and overexploitation are a few ways the actions of people will negatively affect the biodiversity. Deforestation is a major action by people that will cause the loss of biodiversity. People can do this by starting a forest fire, clearing trees for agriculture, and urbanization. Overexploitation occurs when people harvest a species faster than the population can recover. This can apply to overfishing and overhunting. It is estimated that 75 to 80% of fisheries are fully or overexploited. One example of overfishing would be shark hunting. Every year, about 100 million sharks are killed due to this event. Since sharks are at the top of the food chain, the balance of the ecosystem is thrown off because of the decreasing number of sharks. As you can see, people are increasing the rate of extinction and loss of biodiversity because of our harmful events. Habitat destruction, habitat degradation, pollution, deforestation, urbanization, overuse of resources, and overexploitation are many ways caused by people that will result in damage to the environment. Once there is a loss in biodiversity, then the services that the environment had to offer will slowly decrease. सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हो गया कंप्लीट, हम चलते हैं आगे। मुझे तो अच्छे से समझ आ गया, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलो जी, एक्सटिंक्शन इज द फिनोमेना व्हेन all the members of any species are terminated. The species loses the ability to breed and recover its population size long before its extinction, which is marked by the death of its last individual. The death of this last member of the species is also known as moment of extinction. There could be multiple reasons which result in extinction of a species.
disruption of habitat, loss of ecosystem interactions, disruption of food chain or web, symbiosis and predation. Some other factors are pollution, loss of genetic variation in the population's gene pool, catastrophic disturbances, and natural and human caused activities. These factors can affect the population either independently or work in synergy as well. Disruption of ecosystem interactions is the most significant such factor. One such disruption is the loss of habitat as a significant number of animal species are extinct now when they lost their habitats. Human activities are adversely affecting habitats across the globe, ranging from air and forest to tundra and ocean floors. Human affect habitat in three different ways: habitat destruction, pollution, and habitat fragmentation. In this lesson, we will learn about extinction and habitat loss. Okay, बहुत अच्छा समझ आ गया मुझे, हालांकि स्पीड थोड़ी तेज़ की थी तो वीडियो की फिर भी अच्छा समझ आ गया। मैं स्पीड तेज़ करने से ना ज़्यादा अच्छा से समझ आ रहा है। आई होप आप लोगों को भी समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म्ड बाय राइजोस्फीयर एसोसिएशन इज डैश किलोग्राम पर एन पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन फिक्सेशन dash cannot be found in air in gaseous state. Denitrification is inhibited by all are correct, thanks Lord। आगे चलते हैं। सो हमारे टॉपिक हो गया कंप्लीट, हम चलते हैं आगे। हमारा टॉपिक नंबर 49, इसका नाम है डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट 1। ये असेसमेंट ले लेते हैं। which is the best equation of photosynthesis? हाँ जी, हमारी ये है। Photosynthesis and chemosynthesis are the two processes used by dash for production of food. Sorry. आगे है heat is radiated into space in the form of all are correct, thanks Lord। अब चलते हैं आगे। वीडियो को अच्छे सुन लेते हैं। अभी आपने स्पीशी एक्सटेंशन की एक वीडियो स्टडी किया है जिसमें देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, उसमें से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी थी, उसमें पोल्यूशन भी थी, एंड देन देयर वाज हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन एज वेल। सो वी विल स्टडी दीस थ्री रीजंस इन डिटेल। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, फोकस करके, तो फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फौरन आपके दिमाग में ना आ जाएगा, मतलब समझ आ जाएगी। बहुत ईजी चीज़ें हैं, इसीलिए मैं स्पीड अप करके जो है ना देख रही हूँ, और टॉपिक्स भी ज़्यादा है ना, इसलिए मुझे समझ आ रही है। होप आप लोगों को भी आ जानी चाहिए। डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट इज हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमारे आजकल का जो एनवायरमेंट है और उसमें एक बहुत डिबेटेबल और मोस्ट रिस्पॉन्सिव एक ऐसा टॉपिक है जिसपे बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस और सिविल सोसाइटी दे आर रिस्पॉन्डिंग टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। सो वी नो कि स्पीशीज एक पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीच में रहती हैं and they have a limited range of tolerance towards different factors, for example temperature, for example salinity and pH। अगर ये niche और habitat disturb हो जाए तो वो species survive करने के काबिल नहीं रहेंगी। They will have to migrate, they will have to move towards other habitats जहाँ पर उनकी vulnerability जो है वो increase हो जाती है, because they are not familiar with the predators, with the abiotic factors, conditions in the new habitat, और ये सब चीजें मिलकर उस species की extinction में role play करती हैं। So the habitat destruction is a process जिसमें कि एक natural habitat में इस तरह के चेंजेस लाई जाती हैं जिससे it becomes incapable of supporting its native species, and these native species include from microbes till the large mammals। So वो organisms जो कि उस habitat में रह रहे होते हैं, survive कर रहे होते हैं, habitat destruction के बाद they will have to displace themselves, disperse, migrate, or they are just destroyed।
अगेन के जो मेजर रीजन है किसी भी हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन में, दैट इज ह्यूमन एक्टिविटीज. So human activities की जो causes हैं, which are responsible for destruction of any habitat, these are clearing of habitat for the purpose of agriculture and for the purpose of urban developments. The other reason is deforestation. Third cause is mining, and then trawling, and then urbanization. So these are the causes which are responsible for destruction of habitat, and unfortunately human is behind all these causes. So the first reason, which is we are clearing the habitats for the purpose of agriculture and urban development. इस प्रोसेस में ऐसे नेचुरल हैबिटेट्स जहाँ पर के फ्लोरा फौना दोनों बहुत अरसे से फ्लरिश कर रहे होते हैं, वहां पर से लैंड को क्लियर कर दिया जाता है ताकि वहां पर एग्रीकल्चर की जा सकती हो, वहां पर अर्बन डेवलपमेंट की जा सके. और ये इतना एक्सटेंसिव अगर हद तक चला जाए तो इसके रिजल्ट में जो चेंजेस आते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं. सो वी आर कटिंग ऑफ द प्लांट्स, वहां की वेजिटेशन को रिमूव कर रहे हैं, वहां से ट्रीज की कटिंग हो रही है, लैंड के फीचर्स को जो है वो डिस्टॉर्ट किया जा रहा है. सो फॉर एग्जांपल इफ देयर आर हिल्स, दे आर सर्टेन अप हिल्स एंड डाउन हिल्स, उसको फ्लैट करके वहां पर ह्यूमन कॉलोनीज या किसी भी हाउसिंग के लिए लैंड जो होती है उसकी फ्लैटनिंग हो रही है. सो ये अगर लॉन्ग टर्म के लिए परसिस्ट करता है तो वहां पर स्पीशीज का रिटर्न करना और दोबारा से फ्लरिश करना इम्पॉसिबल हो जाएगा. तो रिजल्टेंटली इकोसिस्टम इन दैट हैबिटेट इट वुड बी परमानेंटली डैमेज्ड. किसी भी एरिया में अगर 90% हैबिटेट को डैमेज कर दिया जाए या उसकी स्पेस जो होती है उसको रिड्यूस कर दें तो उसके रिजल्ट में वहां पर मौजूद 50% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है. सो दिस इज द प्रिंसिपल कि आप किसी हैबिटेट में 90% रिडक्शन लेकर आएंगे एरिया वाइज तो वहां की स्पीशीज जो होंगी वो 50% एलिमिनेट हो जाती हैं. सो इस प्रोसेस में ह्यूमंस दे आर क्लियरिंग फ्लोरा फौना, दे आर चेंजिंग द फीचर्स ऑफ लैंड, और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर ह्यूमन इनहैबिटेशन के बाद फर्दर जो ह्यूमन एक्टिविटीज कंटिन्यू हो जाती हैं, उसके रिजल्ट में ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनकी एमिशन और इंक्रीज हो जाती है. और इस ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन के रिजल्ट में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, उसमें मीथेन है, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड है. इन ग्रीन हाउसेज की रिलीज बढ़ जाने की वजह से वो हैबिटेट वार्म अप होना शुरू हो जाता है. The other effect which will happen after this habitat destruction, that would be rise in salinity. So this rise in salinity wouldn't allow any return of plant life in that damaged habitat. So there should be a certain legislation, there should be strict rules implemented by the government, जिसमें कि लैंड क्लियरिंग का एक रेशियो डिसाइड करना चाहिए, प्रिंसिपल डिसाइड होगी, स्ट्रेटजी हो कि इस हद तक लैंड जो है वो क्लियर ऑफ हो सकती है, उसके बाद हैबिटेट्स की डिस्ट्रक्शन जो होगी उसको स्टॉप कर दिया जाए. डिफोरेस्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसमें हमें मालूम है कि हमारी अर्थ जो है इट इज 31% ऑफ द लैंड इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट. प्लांट्स और ट्रीज का क्या रोल है किसी भी जगह पर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए, वी आर ऑल फेमिलियर विद इट एंड वी हैव स्टडीड इट सेवरल टाइम्स इन डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स, इवन इन वाटर साइकिल. इसके बगैर लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती. And they are the primary source of food in any ecosystem. So removal of any forest or stand of trees from the land and that would be converted into a non-forest use. So this process is called as deforestation. जिसमें कि किसी भी ट्रीज को, जो कि वहाँ पे एक फॉरेस्ट है ट्रीज का, वहाँ पे ट्रीज भी हैं, वहाँ पे बुशेस भी हैं, वहाँ पे एल्गी और मॉसेस भी ग्रो कर रही हैं, तो दैट एरिया ट्रीज जो है उनको कट ऑफ करके डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा. सो डिफॉरेस्टेशन के रीजंस भी सिमिलर है जैसे कि हमने क्लियरिंग ऑफ लैंड में स्टडी किया, दैट इज एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए लैंड इज रिक्वायर्ड, तो जंगल को काट कर वहां पे लैंड जो है उसको डिफरेंट क्रॉप कल्चरिंग के लिए यूज किया जाता है. फ्यूल इज अनदर रीजन टू बर्न द वुड. दे आर द रीजन्स वहां पे फॉसिल फ्यूल अवेलेबल नहीं है तो वहां पर वुड को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है. उसके अलावा टिम्बर फॉर बिल्डिंग वेरी कॉमन. पेपर मेकिंग इज अनदर लार्ज इंडस्ट्री विच नीड वुड एज अ रॉ मटेरियल. पास्चर्स और प्लांटेशंस लगाने के लिए, डिफरेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए भी फॉरेस्ट जो है उसको कट ऑफ किया जाता है और इसी क्लियरिंग के बाद वहाँ पे प्लांटेशन की जाती है. इसमें बहुत कॉमन एग्जांपल जो है वो पाम ट्रीज की प्लांटेशन है, जिसमें टी जो है उसकी प्लांटेशन है, इसमें बहुत बड़े बड़े एरियाज जो है वहाँ पे डिफोरेस्टेशन से फॉरेस्ट को खत्म करके इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इंडस्ट्रियल बेनिफिट के लिए प्लांटेशन जो है उनको ग्रो किया जाता है. But the other thing is urban development. Human population is expanding and it's expanding all over the world and they need houses to live. और उनके लिए उस हाउसिंग की बिल्डिंग के लिए फॉरेस्ट या नेचुरल हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट करना जो है वो इनएविटेबल होता चला जा रहा है. तो रिजल्टेंटली फॉरेस्ट आर बीइंग कट ऑफ और वहाँ पर हाउसिंग जो है वो बिल्डिंग की जा रही है उनकी. सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड डिफोरेस्टेशन. बट अनफॉर्चुनेटली डिफोरेस्टेशन इज कंटिन्यूड प्रोसेस एंड रिफोरेस्टेशन इज वेरी मच इग्नोर्ड. हम जंगल काट तो रहे हैं लेकिन उनकी जगह पर नए प्लांट्स जो है उनको ग्रो करने पर स्पेशली डेवलपिंग अंडरडेवलप्ड कंट्रीज दे आर पेइंग नो अटेंशन. Resultantly, this damage and loss of biodiversity is being permanent and there is no high chances of their reversal. Habitat destruction के क्या impacts हैं biodiversity पर, population sizes पर? Let's watch this video to study that. Forests cover about 30% of the planet, and the ecosystems they create play an essential role in supporting life on Earth. But deforestation is clearing Earth's forests on a massive scale, and at the current rate of destruction, the world's rainforests could completely disappear within 100 years. Why should we care about deforestation? Together, forestry and agriculture are responsible for 24% of greenhouse gas emissions, making deforestation a significant contributor to climate change. Deforestation impacts the amount of greenhouse gases in the atmosphere in two ways. First, when trees are felled, they release the carbon they are storing into the atmosphere. Second, trees play a critical role in absorbing the greenhouse gases that fuel global warming. Fewer forests mean larger amounts of greenhouse gases entering the atmosphere, and increased speed and severity of global warming. In addition to helping regulate the Earth's climate, forests provide habitats for over 80% of the plants and animals that live on land. But deforestation destroys these habitats, diminishing biodiversity. Some estimate that 4,000 to 6,000 rainforest species go extinct each year. This also affects the more than 2 billion people who rely on forests as sources of food and shelter. The biggest driver of deforestation is agriculture. Farmers chop down trees in order to plant crops like soybeans, palm trees, and cocoa, or to make room to raise livestock for beef. Logging operations, which provide the world's wood and paper products, also cut countless trees each year. Forests are also destroyed as a result of growing urban sprawl as land is developed for dwellings. So ये वो causes हैं जो कि deforestation को
इनहेंस करते चले जा रहे हैं. So let's see कि डिफोरेस्टेशन के क्या इम्पैक्ट्स आते हैं किसी भी एनवायरमेंट के ऊपर. The major impact is global warming. So we are familiar with the greenhouse gases. और ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल में हमने स्टडी किया. कार्बन डाइऑक्साइड इज वन इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. प्लांट्स आर कंज्यूमिंग दैट कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इन केस अगर हम डिफोरेस्टेशन करते चले जाएं, प्लांट्स का नंबर ही रिड्यूस करते चले जाएं, तो वो सारी एक हमारी इकोसिस्टम का वो पार्ट जो कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करता है और इसके बैलेंस को मेंटेन रखता है हमारी एटमॉस्फेयर में, वी आर एक्चुअली रिड्यूसिंग दैट पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूमर्स. रिजल्टेंटली कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम होगा वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करता चला जाएगा. इसका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर है. सो सबसे जो डिवास्टेटिंग एक फिनोमेनन है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की डिफोरेस्टेशन है. बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द मोस्ट डेंस फॉरेस्ट एंड दे आर फॉर्मिंग 20% ऑफ वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस एमिशन. इनकी डिफोरेस्टेशन का रिजल्ट इसमें 20% इज अ ह्यूज कंट्रीब्यूशन, जिसको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कटिंग के रिजल्ट में 20% का इंक्रीज हो रहा है. सो ये तो एक अदर फैक्टर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट या वॉल्यूम जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है. बट एट सेम टाइम वंस वी आर बर्निंग द वुड, we are obtaining from the deforestation, decay of this wood and burning of this wood is adding more carbon dioxide in our atmosphere. Similarly, carbon का स्टोर जो है सॉइल के अंदर वो भी इस डिके के रिजल्ट में इंक्रीज करता चला जाएगा. So we are adding more carbon dioxide in our atmosphere, in our soils. Water cycle पर obviously के deforestation का एक बहुत impact है because plants and trees they are playing the role of transpiration in the water cycle. So the rate of transpiration of these trees that will be reduced as a result of deforestation. इसका रिजल्ट ये निकलता है कि water vapors का component जो होगा वो एटमॉस्फेयर में कम होना शुरू हो जाता है, which causes a drier climate. और एटमॉस्फेयर के साथ साथ हमारी जो सॉइल होगी उसमें भी मॉइस्चर का कंटेंट लो होना शुरू हो जाता है. लेस वाटर विल बी अवेलेबल फॉर द प्लांट्स to be utilized for the process of photosynthesis to perform their functions. So plants की population भी ultimately reduce होना शुरू हो जाती है. And we know roots of trees and plants they are holding the soil particles and they are saving our soil from erosion. So in case कि हम plantation ही reduce कर दें, forest को काट दें, तो वो सारी roots उन plants की वो roots जिन्होंने कि उन soil particles को hold किया हुआ है, हम उस pressure को remove कर देते हैं. Resultantly rate of erosion, flooding, landsliding it would increase. Decline in biodiversity is another drawback of this deforestation. जैसे ही हैबिटेट डिस्ट्रक्ट होता है, फॉरेस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है, उसमें एनिमल्स के लिए शेल्टर अवेलेबल नहीं है, दे डोंट हैव फूड अवेलेबल देयर. सो रिजल्टेंटली इट वुड कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीशीज. अगर ये बहुत एक्सपेंडेड लेवल के ऊपर डिफोरेस्टेशन हो रही है तो बहुत बड़ा एक एरिया जो होगा अफेक्ट होता है. उसमें ऐसी स्पीशीज जो कि स्लोली मूव कर रही हैं या वो इमोबाइल हैं, दे कांट इवन मूव, सो दे हैव नो अदर ऑप्शन एक्सेप्ट बीइंग एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्शन के साथ साथ इट इज ब्रिंगिंग डिस्ट्रक्शन इन देयर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन. फॉर एग्जांपल सिम्बियोसिस, फॉर एग्जांपल प्रेडेशन. इफ वी रिमूव वन प्रेडेटर, इसके जो प्रे होगा उसके पॉपुलेशन साइज इंक्रीज करता है, व्हिच विल अफेक्ट दैट फूड जिसके ऊपर वो खुद डिपेंड कर रहा होगा. सो देयर वुड बी टोटली इम्बैलेंस इन अ फूड चेन और फूड वेब. सिमिलरली इन केस ऑफ सिम्बियोसिस, वो स्पीशी जो कि दूसरी स्पीशी के लिए ऑब्लिगेटरी इंपॉर्टेंट है, दैट स्पीशी इज बीइंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द हैबिटेट. द अदर स्पीशी वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव आल्सो. सो दीज इम्पैक्ट्स आर डिक्लाइनिंग द बायोडाइवर्सिटी वेरी रिमार्केबली. Mining is an important industry because it's bringing a lot of money. हमें अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए, different industries को चलाने के लिए वो need minerals and these minerals are coming from the industry of mining. Mining is that process which needs complete removal of everything to get access to the mine. तो किसी मिनरल के लिए उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए वहाँ का पूरा हैबिटेट जो है उसको डैमेज करना माइनर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है. So they clear the land, they cut all the trees and then they start digging. जिसके रिजल्ट में वो वहाँ की लैंड के जो फीचर्स है उनको भी चेंज करना शुरू कर देते हैं. For example, in this pictures we can see it is a mining area और इस माइनिंग एरिया में बहुत दूर तक कोई भी प्लांट नजर नहीं आता. एंड वी कैन सी इजीली कि इस माइनिंग के रिजल्ट में वहाँ का जो लैंडस्केप है वो किस हद तक डैमेज हो गया. एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस दिस डैमेज इज परमानेंट डैमेज. इवन इफ द माइन इज अबैंडन्ड, इट इज लेफ्ट, स्टिल देयर इज अ वेरी लो चांस कि वहाँ पर दोबारा से सक्सेशन या सेकेंडरी सक्सेशन के प्रोसेस के थ्रू लाइफ जो है फिर ओरिजिनेट हो सके. सो मोस्टली इन केस ऑफ माइनिंग हैबिटेट इज परमानेंटली डैमेज्ड. इन फीचर्स के साथ साथ और जो नेगेटिव इंपैक्ट्स माइनिंग के आते हैं कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दिस डिगिंग दे आर रिलीजिंग द पोल्यूटेंट. ह्यूमन एक्टिविटी वहाँ पर पोल्यूटेंट्स को रिलीज कर रही है. वहाँ पे यूज होने वाले vehicles and machines they are adding up more pollutants. So during the process of digging there could be release of different kind of toxic materials from the soil from the process because they are using the chemicals for processing of those minerals which is in the form of a raw material. So somehow कुछ level तक उसकी processing अगर वहीं पे कर रहे हैं so they are adding the toxic elements. और heavy metals के addition जो है वो भी एक बहुत बड़ा high risk है because they are being accumulated in the environment. So mostly वो water bodies जो कि उस mining area में मौजूद हैं they are very much polluted by these toxic compounds, minerals and heavy metals. एक और जो एक negative impact है mining का वो ये कि in proper functioning of mining they need to pump out the water. अगर वो उसको digging करके नीचे जा रहे हैं और वो ground discharge हो रहा है fresh water underground water का, so they will have to pump out that water. Resultantly underground water का table जो होगा उसका level shrink करना शुरू कर देता है because they are wasting that water. Mining के बाद trawling is another reason which is destructing aquatic habitats. Trawling is a technique जिसमें कि हम एक बोट के साथ बहुत बड़े-बड़े nets लगाकर they are catching the fish in wild. So the purpose is catching the fish and these nets are really huge. They are catching tons of fishes in one trawl. But इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं कि इट इज कैचिंग द हैवी नंबर या उसका एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ फिशेस आर बीइंग कॉट विदाउट एनी सिलेक्शन. वो सारी स्पीशीज जो कि उस ट्रॉल में कैच हो जाती हैं वेदर वो वांटेड है वो अनवांटेड है. दे कुड बी फिशेस, दे कुड बी अदर इनवर्टिब्रेट्स, दे कुड बी अदर वर्टिब्रेट्स व्हिच आर नॉट रियली वांटेड. एवरीथिंग इज बीइंग कॉट बिकॉज ऑफ दिस नॉन सेलेक्टिव फिश कैच टेक्निक व्हिच इज ट्रॉलिंग. इसका रिजल्ट ये निकलता है कि वहां पर पॉपुलेशन साइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज इट इज बीइंग ओवर कंज्यूम्ड एंड ओवर एक्सप्लॉइटेड. अगर ट्रॉलिंग इसी तरह से ही कंटिन्यू रहती है उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई लेजिस्लेशन नहीं है, तो वहां पर मौजूद aquatic स्पीशीज जो है वो बहुत तेजी से एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगी.
फिश की पॉपुलेशन साइज या उसका नंबर रिड्यूस होने के साथ साथ जो एक और एक नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये कि इनका जो फिशिंग जियर होगा इट वुड बी टॉइंग एट द बॉटम ऑफ द सी. तो वो जियर इसकी सी की बॉटम के साथ साथ ही मूव करता है और इट इज डैमेजिंग द सी बेड. और सी बेड की डैमेजिंग के साथ साथ ये शटर करता चला जाता है वो सारे हैबिटेट्स को जिसमें कि स्मॉल एनिमल्स सर्वाइव कर रहे होते हैं. एंड दीज हैबिटेट्स कुड बी रिमूवल ऑफ सीवीड्स एंड इट कुड बी डैमेजिंग ऑफ कोरल रीफ्स. सो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी वीडियो हो गई है कंप्लीट. हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ. Habitat destruction is the process in which a natural habitat becomes incapable of supporting its native habitant species. These species are either displaced or destroyed, which results in reduction of biodiversity of that habitat. Human activities such as land clearance for agriculture and urban development, deforestation, mining, trawling and urbanization are responsible for habitat destruction. Cleaning habitats for agriculture and urban development is destructive for natural habitats. It can be irreversible depending upon the extent of the activity, as it could permanently destroy the whole ecosystem. If 90% of the area is cleared, 50% of the native habitat species could be eliminated. Once the flora and fauna are cleared, the resultant rise in greenhouse gas emission and soil salinity further damage the ecosystem. Legislative regulations must keep a check on extent of land clearance to avoid loss of biodiversity. About 1/3, 31% of the land is covered by forest across the globe. These provide habitat for a wide range of animal and plant species to live and survive. Deforestation is the removal of a forest or a stand of trees from land, which is then converted to a non-forest use. Deforestation is the result of agriculture, search and extraction of fuels, timber for building pastures and plantation, raw materials for industries and urban development. Insufficient rate of reforestation has resulted in habitat damage and biodiversity loss. Global warming and consequent climate change is one of the most prominent impact of deforestation. Destruction of tropical forest is resulting about 20% of the total greenhouse gas emission across the globe. Deforestation also impacts the water cycle. As we know that trees not only hold water in soil, they also transpire water, which maintains the amount of water vapor in the atmosphere. Decrease in trees results in reduction of moisture in soil, drier climate and reduction in the quality of water available for plants. This results in erosion, flooding and landsliding. Another adverse impact of deforestation is the decline in the biodiversity. Forests are the habitat for over 80% of all the animal and plant species on land. Deforestation has resulted in extinction of species, loss of genetic variation in the gene pools of a population. If a significant portion of the population is eliminated, and also affects interspecific interactions as well. Mining is another human activity that destroys the ecosystem and habitats. Mining requires removal of everything to get access to the mineral. It involves land clearance, deforestation and digging. As a result, the habitat is permanently damaged beyond repair. Adversely, the mines are a significant source of pollution regardless of their operations. The water bodies near mines are exposed to heavy metals and toxic minerals due to mining. Moreover, the water is pumped out of the mine for allowing the miners to work, results in
reduction of underground water levels. Trawling is the human activity adversely affecting aquatic ecosystem and habitats. It is the practice of pulling of a fishing net through the water behind one or more boats. Trawling results in heavy catch of fishes from the wild. As a result, all the animals, both wanted and unwanted, are captured, thus being eliminated from their habitat, along with damages to seabeds and destruction corals and marine plant species. In this lesson, the students will learn about land clearance for agriculture and urban development, deforestation, mining, trawling. ओके डन. अब हमारा लास्ट स्टेप है वॉश असेसमेंट. इसको कर लेते हैं. डैश कैन नॉट बी फाउंड इन एयर इन गैसियस स्टेट. phosphorus is an important component of so both are correct. Thanks Lord. So क्लोज कर दें. तो यहाँ तक हमारे कितने टॉपिक्स हो गए हैं? 49. अब अगले टॉपिक से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.